of the hour. That is the situation in Manipur, the turbulence, the instability that has been going on in Manipur for the longest time now. As the deadlock over Manipur continues in the monsoon session of the parliament, a delegation of the opposition alliance I.N.D.I.A is travelling to Manipur for a 2-day visit. Now, the aim is to mount pressure on the government in the run-up to the no-confidence motion that has been introduced in the parliament, and a 20-member team of the opposition is on its way to visit the epicenter of the crisis in Churachandpur, and they will also be visiting relief camps in Imphal. Now, remember, an all-party delegation to the state was one of the opposition's demands. The other being that fact that the Prime Minister should be present on the floor of the House during a debate, and that the President's rule must be imposed in Manipur. And now we have some breaking piece of information coming in regarding this particular story, wherein Union Minister Anurag Thakur has slammed the opposition MP's visit to Manipur, and he has said, and I quote, "I am asking this delegation, will they visit West Bengal also? Will they visit other non-BJP ruled states also, where crime against women have risen?" This is what the Union Minister Anurag Thakur has had to say about the opposition MPs visiting Manipur today, and we have a reaction here. Let's have a look. वो एक हत्या का दौर जो पश्चिम बंगाल में चला, 57 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी गई। मणिपुर की ओर जहाज में बैठकर गए हैं के नेता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या 19 सदस्यों को मणिपुर के बाद कलकत्ता लाएंगे? क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग पश्चिम बंगाल आएंगे? क्या राजस्थान में प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप किए जाते हैं? क्या कांग्रेस को राजस्थान और बंगाल की महिलाओं में उनकी और कोई सहानुभूति नहीं है? Well, we heard what the Union Minister had to say, and now we have Pallavi Ghosh joining us live on the broadcast. Pallavi, well, yet again we have seen that Union Minister Anurag Thakur has brought up the fact that why isn't the opposition MPs visiting places like West Bengal or non-BJP ruled states where violence against women have also taken place? Now, the question keeps arising here that does a visit to Manipur mean that the attention from other states is being diverted to Manipur, especially when a particular situation where Manipur is the focus right now? Manipur has been burning for more than 2-3 months now. So shouldn't the focus be on Manipur? And then definitely, why do they have to constantly bring up the question of whether these things are exclusive of each other or not? Well, that's exactly the point which the BJP is asking, and the BJP has been asking it on the floor of the House. If you remember, a few days back, the I.N.D.I.A, the Women and Child Welfare Minister, the Prime Minister himself, when he was in Seeker, raised this question that why does no one talk about the fact that Rajasthan also sees maximum number of crimes against women. If you look at the data which has been put out by the NCW, they also claim that one of the highest, or the rape capital, if you want to use that word, is also Rajasthan, and many of them go unreported, no FIRs are filed. What the government is saying, and something which is epitomized by what Anurag Thakur just said a short while back, is the fact that yes, it is important to raise the issue of Manipur. We don't condone what happened over there. But at the same time, one should not turn a blind eye to, say, a West Bengal or Chhattisgarh or even to Rajasthan, where similar crimes are happening. And why is it that the opposition party is being selective in its outrage? Right, Pallavi. But if we are discussing this, we must also remember the fact that the Congress at the state level had questioned the TMC about the fact that these kinds of violences have been taking place in West Bengal as well. The Congress, as in Adhir Ranjan Chaudhary, has raised the point, and I think the BJP is not just referring to the ground level, they're talking about the India front, and the timing is important because today the India front is on its way to Imphal, and they certainly will be focusing on the crime against women, the viral video. They have not bought the argument that a CBI probe is going to ensure justice. The question which is being asked then by the government is that you want to talk about Manipur, you go there, but why is it that the India front per se is also not going to say a Rajasthan, or it's not going to say a West Bengal? State units fighting over an issue is different from the national perspective or a national unit fighting, and BJP is trying to point out what they call the duplicity or the double standards of the opposition party.
Right, Pallavi, thank you for all those details. And right now we are going to take a look at all the reactions that have been coming in on this particular visit of the opposition MPs to Manipur. मणिपुर पर चर्चा हो लोकसभा और राज्यसभा में। मणिपुर में एक एलओसी जैसा वातावरण बना हुआ है, जहां पर समाज के दोनों वर्गों के पास हथियार हैं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए हैं। दोनों तरफ से आक्रमण को सहना पड़ रहा है, तो पूरी तरीके से कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई है। उनका सिर्फ सत्तावाद में विश्वास है। सत्ता के लिए आज उन्होंने मणिपुर राष्ट्र की अखंडता को आज बलि पर चढ़ा दिया है। तो मणिपुर जा रहे हैं, वहाँ का स्थिति देख के आएंगे। ऐसे भी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ अब इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल भी सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम वहाँ पे जाके देखेंगे और सदन के पटल पर रिपोर्ट पेश करेंगे। मोदी जी दूसरे प्रदेशों को मणिपुर के साथ जोड़ने का कोशिश ना करें। जिस तरह पूरा देश जान रहा है कि मणिपुर में किस तरह से वहाँ के लोग बेघर हुए, किस तरह से उनके घर दुकानें को जलाया गया। देखिए, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के अंदर बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मणिपुर में निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, गर्दन काट के पेट पे लटका दी गई। ऐसे ऐसे इंस्टांस अखबारों में पढ़ने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी संसद में आ नहीं रहे। तो ये तय किया गया कि वहाँ पे जाएं, वहाँ की वस्तुस्थिति देखें, वहाँ के लोगों से मिलें, उनके दर्द को बांटें और फिर उसकी जो रियल ग्राउंड जीरो की जानकारी है वो संसद के अंदर रखें। निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, परंतु जब दुखी लोगों से व्यक्ति मिलता है तो दुखी लोगों के मन के अंदर भी कुछ उम्मीद जगती है। पिछले लगभग 86 दिन से वहाँ पर जो एथनिक वायलेंस चल रहा है, इसके बारे में पूरा देश मणिपुर के लोगों के बारे में कंसर्न है। वहाँ के स्थानीय लोगों को हम ये बताने जा रहे हैं और वहाँ पर शांति स्थापना के लिए देरी क्यों हो रहा है, वहाँ पर हीलिंग टच देना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी वहाँ पर होना चाहिए। हम अभी वहाँ पर ये समय कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने का समय नहीं है।